अस्सलाम वालेकुम। इन इस लेक्चर में हम वी विल डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री के अंदर हम बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन क्या यूज़ करते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ दिस कंडक्टोमेट्री, दैट इज़ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस. So if we see the instrument of conductometry, then we have three main parts of a general conductometric instrument, conductometry instrument. So the conductance, the instrument used for the measurement of conductance is known as the conductometer, और conductivity meter भी इसको हम कहते हैं. This is mainly consist of the current source, which is an alternating current source. Number two is conductivity cells, in which we have different types of conductivity cells like type A, type B, type C, and then we have electrodes. See, first of all, we will discuss about the current source. This current source is mechanically high frequency AC generator by Washburn, and then we have Vreeland oscillator by Taylor and Ackery, and then we have vacuum tube oscillator by Hall and Adams. ये मुख्तलिफ लोगों ने जो ये चीज़ें इन्वेंट की, बट वी आर यूजिंग इन टूडेज conductometric instruments. So when the electric potential is applied across electrodes, there are two processes which normally occur. We see number one, ions accumulate near the electrodes. Transfer of charge through the interface starts, and here we should note that direct current is not employed in conductance measurement because the electrodes will become polarized, and that will lead to high cell resistance, which is not favorable for conductometric measurements. Number two, we have conductivity cells. These are made of pyrex or quartz, and these are fitted with two platinum electrodes. These cells should be placed in vessel containing water to maintain the constant temperature. There we have type A, type B, type C conductivity cells. Conductivity cell का जो normal manufacture है, normal जो structure है, we can see there there is platinized electrodes. platinized electrodes हैं, ये टैंक है जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, और ऊपर हमने कनेक्टिंग वायर्स लगाई हैं, और कनेक्टिंग वायर्स जो हैं वो प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड्स के साथ जो है वो डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं. एक सिंप्लीफाइड करके राइट साइड पे आपको एक डायग्राम दिखाई है. उसमें इलेक्ट्रोड्स हम इसमें क्या यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रोड्स आर एक्चुअली platinum sheets, each of 1 centimeter square, and these are fixed at a distance of 1 centimeter. The surface is coated with platinum black to avoid the polarization effect and increasing the effective surface area of the electrode. Platinization of electrodes is mainly done by coating solution, which is 3% chlorplatinic acid and lead acetate, uh, which is platinized on the surface of the electrode to get the uniform coating. And electrodes usage will depend on the conductivity and concentration. If concentration is low, then electrodes should be largely and closely packed. And conductometric measurements हम कैसे करेंगे. इसमें एक्चुअली हम कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट्स जो करते हैं उसमें मेनली जो है वो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस हैं. कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस कैसे हम उसमें कंडक्टोमेट्री के थ्रू कैसे करेंगे, बिकॉज वी नो द डिटर्मिनेशन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन कैन बी मेड by the help of conductivity measurement, which is known as conductometric titration. Conductometric titration के अंदर जो है वो titrant is added, the value of the conductivity this is then plotted against the volume of the titrant in cubic centimeter. हमने कितना ऐड किया, उसके रिजल्ट में उसके रिस्पॉन्स में कंडक्टेंस जो है वो किस तरह से चेंज हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई,
तो उसको हम measure करेंगे. और measured conductivity is actually the linear function of concentration of ions present in the conductometric instrument. Cells, two lines will be obtained which will intersect each other at a point which is known as end point or equivalence point. Equivalence point के बाद क्या behavior होता है solution की conductance की basis पे वो line increase होगी या decrease होगी. तो ये सारी चीज़ें हम आगे discuss करेंगे conductometric titration के अंदर. This is the normal simple instrument of conductometric used for the conductometric measurements, which is called as conductivity meter, electrical conductivity meter, EC meter और conductometer. तो इसमें देखें हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सीक्वेंस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का जो है एक नॉर्मल वे कैसे हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस करते हैं. तो इसमें हमारे पास एक कंडक्टिविटी मीटर है, कंडक्टिविटी मीटर का कंडक्टिविटी सेल है. कंडक्टिविटी सेल जो है उसके अंदर हमने एक स्टिरर रखा हुआ है सो दैट द सोल्यूशन रिमेन्स आयंस इन द सोल्यूशन रिमेन इन कांस्टेंट मोबिलिटी. और उसके बाद ऊपर हमारे पास ब्यूरेट है विच इज़ यूज्ड फॉर द एडिशन ऑफ द टाइट्रेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. So this was about the instrumentation of conductometry, and next we will discuss about the conductometric titrations.